So, good afternoon, Santosh, Ayushi, Rutuja, and who is that? Param Pratik Recipes. May I know your name, please? Because you have logging from a different ID, Param Pratik Recipes. So, may I know your name, please? All of you, please write down your name because you have logging from a different ID. So I want your name. So all the students, please write down your name. As Santosh he has written, Ayushi also written, Rutuja, Ira is also there. Please write down your name. Prem Pratik recipes. These ideas new. So I just want myself Yatharth. Okay, that's why. If you are logging from your any other ID, so you have to write your name now. How I will know who are that, who are you? So always you have to write your name. Okay, whatever may be, your mother ID, your mother channel, whatever may be. So, but you have to write your name. So, okay, students, welcome back. Okay. So, once again, I will just thank you all of you for your wonderful wishes on Teachers' Day. Okay, so before going to start our new lesson, just few instructions I want to give you. Like tomorrow, we have finished our Delhi Sultan lesson. So tomorrow there will be a test on Delhi Sultan this lesson, and I will give you the question answers that you have to write it in your notebook. So go through textbook, okay, because last test many students they score less mark. Only 26 students appeared, and out of that 26 students, many students, only few only they scored good. Rest of the students they score below 5 marks. So that I don't want. That's why I am informing you. Yes, I know better. Those who score good marks, full some of the students they score full marks also. So those who will study, so they will score. So that's why once you go through the textbook, okay, that's why. Okay, fine. Ma'am, in the Desh webinar contest, I log in so many times, but then also they are showing the same page of registration. Desh webinar, I think that Antep you are talking about Antep. Ira, you are talking about Antep. Ira, you have written you are talking about Antep. Antep quiz you are talking about. Ira Vasade. Can you hear me, Ira? You have written there the Desh webinar. I'm not getting actually. Uh, Whatever may be, one more. This one I will share, not share. I will share. That is the Geography Olympiad. This is also a very good. So all the students I will request to participate. I have not shared. I will because today only they send me that full details how you have to register and all this thing. It's of my government. Okay, okay. It's of my government. Okay, okay. So my government, Sadul, he has shared me the certificate. Then Adamya also shared the certificate. So better you can register, no? You can register my government that you can register. It's no problem. एक बार आप register कर दोगे तो time to time they will send that the quiz is there. The notification will come. So you can share. You can register yourself. That is very good. Government की तरफ से है बेटा ये.
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई ऐसा फ्रॉड वाला नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। तो एक अच्छा साइट है, आप रजिस्टर कर लो और नोटिफिकेशंस दे आर गिविंग इन योर मेल आईडी, एवरी टाइम दे विल सेंड नोटिफिकेशंस, है ना। वो जब अगर कोई नया कुछ अपलोड करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे क्विज, आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विज वहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। Because that is good site, so you can register yourself there, isn't it? Okay. So we will go the new lesson, that is air lesson. हम अभी नए चैप्टर्स में आएंगे, that is air lesson geography, and today just introduction we will do. So just we will go back, एक रिवाइज रिकैप करें, ठीक है, ग्लांस देंगे। पहले हमने जो जो चैप्टर्स ज्योग्राफी में पढ़ा, we have finished 3 chapters. In the first chapter we have already discussed about the components of the earth, है ना। हमने पहले चैप्टर में कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, सो आपने किसके नाम से रजिस्टर किया है, किसके लॉगिंग आईडी से रजिस्टर किया है। ऋतुजा, आपने आपके अगर मम्मी के मोबाइल नंबर से अगर लॉगिन किया है तो आपका मम्मी का जो मोबाइल नंबर है वही आपको वहां पर सेंड करना है ना, वही उस पर फिल करना। आप अगर पापा के लॉगिंग आईडी से लॉगिन करोगे, मेल आईडी अगर है, तो आपको पापा का मोबाइल नंबर ही देना है, क्योंकि नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सबका सब चीज कनेक्टेड है ना आधार कार्ड से, तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है, क्लियर। विच लिंक यू वांट श्रीवत्सा? I have not shared any link on that day, just I told how you have to go to the my government site, that is the mygovernment.in quiz. So there either directly, if you have already registered, so directly you can log in. अगर register नहीं है तो you have to first register and then log in for in a quiz. Okay, so always when you will log in, mobile number you entered, so OTP will come, and that OTP you have to enter, and then that quiz will start. You have to go to that page, home page. Okay. So in the first chapter we have discussed about the three that component of the earth, that is the lithosphere, atmosphere and hydrosphere, and all that three where that connect meet, that is the biosphere. So after that second chapter, in that interior of the no, ऐसा तो होना नहीं चाहिए बेटा, it's not. If the mobile number and mail ID is correct, then it will not show them invalid. There may be some mistakes is there, that's why. Okay, once again you try, or I will check, or otherwise I will check the procedure and then I will tell you. Okay, Tuja? So in that second chapter, so again we have discussed about the interior of the earth. So that means interior of the earth, that is the lithosphere. We have talked about the lithosphere. Then again third chapter, that is the changing our earth. So in that chapter also we have discussed about the earth, external force and internal force, and whatever the changes occur on the earth surface, that is the lithosphere. So now we finished that the first part is over, that is the lithosphere part is completely over. Now come to the next component, that is atmosphere. So in that atmosphere it is given there air. Okay, so here if we will see about the earth, so earth we know that it is a blanket of air. Just a minute. So so this is our earth, just to imagine this is our earth, and the earth को cover करके किसने लिखा, a blanket of air, atmosphere, है ना।
ब्लैंकेट ऑफ एयर जो मैंने यहाँ लिखा। सो अर्थ के चारों ओर क्या है? अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। ओके, एंड दिस ओनली नोन एज atmosphere. That air only known as a atmosphere. Okay, clear? Earth, blanket of air and atmosphere. कि अर्थ को चारों ओर से किसने कवर करके रखा? Blanket of air, or we can say mixture of the gases. Okay, and that is only known as atmosphere. उसी को हम क्या बोलते हैं? Atmosphere. Okay, now why? क्यों ऐसा कवर करके क्यों रखा? Why? Because useful for the survival of the human beings, and you know very well in science also I think you have learned that जो mixture of gases है उसमें से एक गैस जो है that is the ozone. You know very well एक गैस जो है वो ओजोन गैस है, and that ozone gas only protect us from ultraviolet rays. जो सन रेज जो डायरेक्टली, अगर वो सन रेज ये एयर नहीं होता अर्थ के चारों ओर, अगर ब्लैंकेट ऑफ एयर नहीं होता तो क्या होता था? डायरेक्ट जो सन का जो रेज है और उसमें से जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्टली इसके ऊपर आता था, अर्थ के ऊपर। और अर्थ में कौन लीव करता है? ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग थिंग्स, वी कैन से एज अ लिविंग थिंग। सो दैट्स व्हाई useful for the survival of the human being. That's why it is written there, this blanket of air, this is useful for the survival of the human beings. Clear? Now next, protect us from harmful effect of the sun rays. So harmful effect of sun rays. This air or this blanket of air, ये जो blanket of air जो है ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमको किससे? हार्मफुल रेज ऑफ सन रेज। सन रेज जो है उसका जो हार्मफुल रेज है उससे हमको ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ओके, विदाउट, जस्ट टू इमेजिन अगर विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर, इसका अगर कुछ होता नहीं था अगर, तो क्या होता था? डे टाइम इज टू मच हीट एंड नाइट टाइम इज टू मच कोल्ड। यही होता था ना कि डे टाइम में जो है वो बहुत ज्यादा हीट होता था, क्योंकि कोई एयर जो है जो वो प्रोटेक्ट करके नहीं रख रहा था, डायरेक्ट सनरेज उस पे फॉल होता था और बहुत ज्यादा डे टाइम जो है वो हीट हॉट होता था और नाइट टाइम इट इज टू मच फ्रोजन जैसे कोल्ड होता। वन एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि जैसे हम ये जो आप बोल रहे हो कि कैसे होता है ये, और ये इसीलिए हो रहा है, ये जो हम देख रहे हैं कि ब्लैंकेट ऑफ एयर हमको प्रोटेक्ट करके जो रख रहे हैं, एटमॉस्फेयर जो हमको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आप देखो कि आपका टेक द एग्जांपल ऑफ योर कार का हम एग्जांपल लेंगे कि अगर कार को हम विंडोज वगैरह सब क्लोज है और वो कार धूप में खड़ी है बहुत देर तक, 1 आवर 2 आवर ऐसे खड़ी है, और उसके बाद तो आप क्या बोलोगे? सनरेज डायरेक्टली कार के अंदर तो नहीं जा रही है, जा रही है क्या? नहीं जा रही है, बट क्लोज है। बट जब आप एंटर करोगे यू विल फील हॉट, आपको उसके अंदर गर्मी लगेगी, बट टू मच नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी। क्यों? क्योंकि जो ग्लास का जो विंडो है वो सनलाइट को जो है डायरेक्ट नहीं आने दे रहा, प्रोटेक्ट करके रखता है ना। अगर यही चीज को खुला होता था, विंडो ग्लास नहीं, तो वो सनरेज जो है डायरेक्ट एंटर होता। टेक द एग्जांपल, अनदर एग्जांपल कि हम नाइट टाइम में जब हम सोते हैं, है ना, नाइट टाइम में और डे टाइम में कभी भी जब हम सोते हैं तो हम किसी को आदत होती है कि या तो ब्लैंकेट ले लो या तो आप बेडशीट्स ले लो, किसी को है ना कि पूरा सो जाते हैं, ओढ़ के सो जाते हैं, पूरा हेड को भी कवर कर लेते हैं। तो आपके बॉडी का जो आप एक्सेल कर रहे हो, एयर एक्सेल कर रहे हो,
वो एयर को कौन प्रोटेक्ट करके रख रहा है? कौन प्रोटेक्ट करके रख रहा है? बेडशीट। तो वो थोड़े टाइम के बाद यू विल ओनली फील द हीट, आपको थोड़ा सा गर्मी लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका एयर जो है एक्सेल जो कर रहा है वो बाहर नहीं जा रहा है। उसको कौन प्रोटेक्ट करके रख रहा है? उसको बेडशीट जो है, जो आप कवर करके रख रहे हो, वो आपको प्रोटेक्ट करके रख रहा है, वो एयर बाहर नहीं जा रहा। सिमिलरली सन अर्थ जो है उसको कौन प्रोटेक्ट करके रख रहा है? उसको ब्लैंकेट ऑफ एयर जो है वो प्रोटेक्ट करके रख रहा है। इज इट क्लियर ना? ओके, नाउ this is just I gave you the basic idea ki what we are going to learn, and yes, ultraviolet, that is only na, and अगर वो नहीं होता एयर ओजोन लेयर, सो वो तो डायरेक्टली हमारे इसमें आ जाता था, isn't it? Now what we are going to learn from this chapter, the first one is, that is composition of the atmosphere. What are the topic we are going to cover from this? That is, the first one is the composition of the atmosphere. Okay, composition of the atmosphere. Now here what we are going to learn, composition of the, so atmosphere में कौन-कौन से gases mixture of, we are saying that the mixture of gases, mixture of gases. So in that the percentage wise we will see which gases is present there, oxygen percentage, at carbon dioxide percentage, so that is everything. So that's why compositions of the atmosphere. Then we will see the structure of the atmosphere. Then we will discuss the structure of the atmosphere. So the structure of the atmosphere, here we will see the structure of the atmosphere, and in that we will discuss about the different layers of the atmosphere. यहाँ पर हम लोग discuss करेंगे कि layers जो होते हैं atmosphere के, all the 5 layers, about that also we will discuss. Okay. Then weather and climate. Of course, when we are talking about atmosphere, so obviously we have to cover this point also, weather and climate. Okay, so we have to cover the weather and climate. Then temperature, pressure. Then this topic also, temperature, then air pressure, then air pressure, wind, moisture, everything in details we will, pressure, wind. So comprehensively we will discuss all the points. Okay, and the last one, that is a cyclone, one case studies it is given there in your textbook. So that also we will discuss here. So a basic idea now you came to know that what we are going to learn from this chapter air. So this chapter is a little bit related to your science topics. I hope maybe you have already finished this chapter in science, so it will very easy for you to understand. Okay. So now I will share the link, attendance link. So all of you have to submit your attendance. And tomorrow we will start our new lesson. Okay, and revise your Delhi Sultan chapter for test. Okay, and question answers also tomorrow I will share. Okay, children. So thank you all of you once again. Submit your attendance fast so that I can end the class here. Beta, now class is over, Jayan. Don't worry. Now I have shared the attendance link that you have to submit. Submitted. If you have submitted, then I will end. Okay. So thank you all of you. Have a nice day. Take care.
Okay, fine. Okay, okay. And everybody, when everybody will submit, then only I will end. Submitted, Iram. Okay. Okay, fine, fine, fine. Thank you.